Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the very first lesson of C++ language. So I am going to discuss about the syntax of the various instructions or commands that can be given in C++. So firstly, I'm going to show you the compiler that I'm using. Basically, I downloaded it from Play Store and available for Android mobiles. Now, as we are going to start with the very basic program, so the very first thing that we have to write in the start of the program is to write the header files. Header files basically contains the definition of the commands or instructions that we use to include in our program. So here, as I am going to write a few of the instructions related to input and output, so I must have to mention here the header file related to the input and output. So which header file isn't related to the input and output is basically IO stream. So how to write that header file in your program? You will always write #include, and now I am going to mention here the name of the file that I am going to use. It is iostream.h. namespace, ठीक है, और नेम स्पेस के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे std. std इज़ बेसिकली द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, और ये आपके लिए क्या करेगा, मेमोरी में नेम स्पेस ऑक्यूपाई कर देगा. So basically these are the two instructions, the first two statements that you must have to write in every C++ program. So now come to the main. Main is basically a function that will be called automatically as soon as you run your program. So we say that there are three parts of main. The first is the return type. Okay, here you can see this int. Int is basically telling us about the return type, that an integer will be returned from the function. Which integer? We are not going to return any integer. Okay, so basically automatically the compiler will return 0 if there is no error in the program and your program is can be successfully executed. The second thing is that the 1 will be returned in the case if there will be some error in your program, and in case of generation of that error, it will return 1. Okay, so 1 is basically the indication of unsuccessful program. Now after that you can see there is the keyword main. So main will always be written like this in all small letters. Now after that we will start the bracket. You can see that the parentheses are used here. Int argc. This is basically telling us that how many arguments are used in the main function. The next is character argv, and the square bracket shows that it is some array. So basically for that arguments that are being used in the main, there is some space occupied in the memory, and that is in the form of array. Now after that we are going to start the body of the main program. Okay, one more thing here, as we have written this int arg and character this, we can even leave this space like this without writing anything. Okay, you can just put the open and the close parentheses and you're not going to write anything. It means void. We are not giving any arguments. Now we are going to write the body of the main function. So basically we need to take some value from the user, or we need to show some value to him. Okay, so firstly I'm going to tell you that how to write the output instruction. So if you need to print something on the screen as it is, okay, so what you can do, you can write this instruction cout, then the angle brackets. Now see the direction of the angle brackets, these will be always be used with cout, and then inside the inverted comma whatever I will write will be printed on the screen as it is. And then I close the inverted comma and I want it to end the line here. Okay, end line. This is a very good practice if you use to write endl in the end of the every cout instruction, because when we will run this command, तो आपके पास क्या होगा कि हेलो प्रिंट होगा, और हेलो से नेक्स्ट मेरी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी, जो भी स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी अगर स्क्रीन पे, तो वो हेलो के साथ बिल्कुल साथ प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, so just to format your output you can just write endl there. ठीक है, so we will write endl, then you don't forget to put the semicolon in the end of the statements. Now after that if I run this program, you can see on the screen hello will be printed like this. Okay, you can see there is hello and then program finished. Okay, now if we want to take some of the input from the user, so if I am going to take input from the user, I will write cin, okay, and then this angle bracket will be used with cin. But do remember you will always be using double angle brackets. So I am going to mention here, if I am going to write for the variable, I am going to mention the variable in which I need to take the value. So whose value I need to take from the user.
So if I'm writing C in A, it means whatever the value the user will enter will be stored in A. So before I use A here, I need to declare it first. Okay, so what is the type? It is integer A. Okay, if I'm going to take some number from the user, I will write int A. And I also need to write a message so the user know that what he is supposed to enter. Please enter an integer. And now after that, okay, I'm going to execute this program. So you can see here is an error that we haven't put semicolon in the end of cout statement. So we need to put this, run it again. Now see, in the first statement it's written hello, then it's written please enter an integer. I am writing 10 here, that is 10, and I will press enter. Program is finished. Okay, if I want to show him which is the value that you entered, so I can write here you entered and then I can just write the value like this. Okay, now see the difference. The instruction that you need to, the statement that you need to print on the screen as it is, you will always be writing it in the inverted commas, and the value of the variable, if I need to print some value of the variable, now you can see here A is written without inverted commas. Okay, so now when I will run this program, on the first line it's written hello, please enter an integer. If I am writing 23, press enter. Now see, it's written you entered 23. Now we are going to discuss about the loops in C++. So basically we know that there are 3 loops, that is for, while and do while. So why we need to write the loops? ठीक है, loop आपने तब program में use करना है when something is printed on the screen in the column wise or in the row wise or in the table form. अगर table form में है तो we will be using nested loop like a loop inside the other loop. और इसी तरह से अगर कोई भी चीज़ आपको रो की फॉर्म में या कॉलम की फॉर्म में प्रिंट होनी है स्क्रीन पे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हमेशा लूप यूज़ करते हैं, और टू प्रिंट सम स्पेसिफिक पैटर्न ऑन द स्क्रीन. So how to use the loop? First of all, it starts with the keyword for. If we are using for loop, open the parenthesis. Now inside the parenthesis there are 3 parts. The first part is declaration and initialization of a variable. So if let's suppose I am going to use a variable x, so I will write int x. I also need to initialize it here in the first part. So I will write, let's suppose int x is equals to 7. I will put semicolon. This semicolon shows कि यहाँ पे first part complete हो गया, हमने declare भी कर दिया और initialize भी कर दिया. अगर आप फॉर्म क्या करेंगे, बॉडी से पहले जो मेन फंक्शन है उसके स्टार्ट में आप लिख देते हैं int x, तो अब यहाँ पे दोबारा int नहीं लिखना है, we can just initialize it like x is equals to 7. Okay, now come to the second part. In the second part we need to write the condition. So what is the condition that we have here in the program is basically I can write x should be less than equals to 10. ठीक है, so as long as x is less than equals to 10, the loop will be executed. So now after that semicolon, now come to the third part. The third part is related to the increment or decrement in the value. So we know कि यहाँ पे मैं increment देना है क्योंकि हम 7 से कहाँ जा रहे हैं, 10 पे जा रहे हैं. ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि 7 से स्टार्ट हो और जब तक वैल्यू जब वो ग्रेटर रहे 1 से, तो तब तक लूप जब एग्जीक्यूट होता रहे, तो इन दैट केस आई विल गिव सम डिक्रीमेंट. और हम यहाँ पे इंक्रीमेंट, अगर मैं x में 1 की वैल्यू ऐड करना चाह रही हूँ एवरी टाइम, तो आई कैन राइट x प्लस प्लस. अगर मैं 1 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ तो आई कैन राइट x माइनस माइनस. एंड अगर लेट सपोज मुझे 2 का गैप देना है, 3 का देना है, 5 का गैप देना है, तो आई विल राइट x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 और x इज इक्वल टू x प्लस 5. लाइक हियर आई कैन राइट x इज इक्वल्स टू x प्लस 2. ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि अगर x की वैल्यू 7 है तो जब नेक्स्ट टाइम लूप आएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी. ओके, इट मीन्स हमारा ये जो लूप है ये 2 टाइम्स रन होगा. नाउ आई एम गोइंग टू गिव द बॉडी ऑफ द लूप, दैट इज दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप. ठीक है, अब हम इस बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे दैट विल बी प्रिंटेड और एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स.
बिकॉज फर्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू 7 है, फिर 9 हो जाएगी, उससे नेक्स्ट टाइम जब लूप थर्ड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो 11 हो जाएगी और आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, सो इट विल स्टॉप एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, एक्स की वैल्यू जब प्रिंट करा लेते हैं। एंड नाउ वी नीड टू पुट सेमीकोलन हियर, और हम यहाँ पे ऐसे करते हैं एंड एल दे देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में भी प्रिंट करता रहे, just for the formatting of our output screen. Okay, now see value of x7, value of x9, और यहाँ पे प्रोग्राम हो गया फिनिश। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इज लिख देते हैं या कॉलन दे देते हैं तो वो उसको शो हो जाएगा कि उसने एज इट इज़ उसको प्रिंट करना है और आपकी फॉर्मेटिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। दिस लूप इज़ वाइल लूप। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द सेम फॉर into the while। ठीक है, हम इसी को ऐसे करते हैं, while में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट बेसिकली, सो while में भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज declaration and initialization. So I will be writing initialization like this, x is equals to 7, declaration already line number 5 में x की हुई हुई है। ठीक है, now after that we will write the keyword while, we will open the bracket and inside the bracket we can just write the condition. So what is the condition? See the condition part in x, in the for loop it is x is less than equals to 10. ठीक, now after that we are going to start the body of the loop, and inside the body of the loop we are going to write the instruction, the statement sorry for the output। ठीक है, क्योंकि हम जो for वाला है उसी को as it is ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं while में। और अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे while की बॉडी एंड होगी उससे प्रीवियस लाइन में आपने क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट देनी है एज इट इज़। सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, x इज इक्वल्स टू x+2 एंड देन वी हैव द सेमीकोलन। ओके, नाउ हियर आई वांट टू प्रिंट कि ये हम यूजिंग फॉर लूप प्रिंट करें। ठीक है, सो दिस इज यूजिंग फॉर लूप, और नेक्स्ट लाइन के लिए हम इंस्ट्रक्शन ऐसे भी दे सकते हैं /n। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट थिंग यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस एंड देन द सेमीकोलन इन द लास्ट, and here the body of while is starting, so I will be printing here cout using while loop /n, it is used for next line same as we are using endl। ठीक है, so दोनों की वर्किंग सेम है। फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। See, you're certain using for loop, value of x is 7, value of x is 9, then using while loop, value of x is 7, value of x is 9. So you can get this output using any of the function. Now I'm going to write the same function using the third option, that is do while. How to write the do while loop? हम इसी को ऐसे करते हैं, ट्रांसफॉर्म करेंगे do while में। So I'm going to start from the next line and this is using do while loop. Initialization, then here we are going to write just do, the keyword do and the body, and in the last of the body you will write while, you will write the condition inside it. So now here in the parenthesis I will write the condition. So what was the condition? The condition is x is less than equals to 10, like this। ठीक, and here we need to put this semicolon in the last। ठीक है, जबकि हमने जब while run किया था तो वहाँ पर semicolon नहीं आता। Now see the last 3 lines using do while loop, value of x is 7, value of x is 9। Okay, now the next thing is conditional statement। तो conditional statement हमारे पास कौन कौन सी हैं? We have the conditional statement if, we have if else, we have nested if else, and we also have switch statement। ठीक है, जिसमें हम different cases दे देते हैं। So let's suppose कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, दैट इज़ लेट सपोज m, और उसकी वैल्यू है मेरे पास -6। ठीक, सो आई जस्ट नीड टू चेक कि क्या मेरे पास जो m है वो नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है, एंड आई एम राइटिंग दैट इफ़ m इज़ लेस देन 0। ठीक है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट cout। तो यहाँ पे प्रिंट करा दें कि m इज़ नेगेटिव इंटीजर,
नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, एंड फुल स्टॉप. सो एज आई एम राइटिंग जस्ट वन स्टेटमेंट अंडर द इफ बॉडी, तो फिर हमें यहाँ पे उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. दिस इज़ बेसिकली द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट. लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स अंदर देना चाहूँगी तो व्हाट आई विल बी राइटिंग इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स. अब यहाँ पे मैं एल्स नहीं लिख रही, मीन्स आई एम जस्ट गोइंग टू चेक कि अगर m 0 से छोटा है तो वो कह दे कि m नेगेटिव है. अगर वो इक्वल टू 0 है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग. नाउ सी वी हैव एन एरर दैट वी हैवंट पुट हियर द सेमीकोलन. नाउ रन इट अगेन. m इज़ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, द प्रोग्राम इज़ फिनिश्ड. इसका मतलब है कि अगर मैं m को यहाँ पे भी पॉजिटिव कर दूँ तो आपके पास स्क्रीन पे कोई आउटपुट भी शो नहीं होगी, ठीक है. यू विल गेट सम ब्लैंक स्क्रीन. ओके, द नेक्स्ट कंडीशन स्टेटमेंट इज इफ एल्स. अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एल्स, ठीक है, और एल्स में मैं यहाँ पे लिख दूंगी सी आउट. अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि m 0 भी हो सकता है और m क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. इट मीन्स कि इट इज़ सम होल नंबर, सो आई कैन राइट हियर m इज़ अ होल नंबर, ठीक. एंड देन वी आर हैविंग अ सेमीकोलन हियर. अब हम यहाँ पे m की वैल्यू चेंज कर देते हैं क्योंकि हमने नेगेटिव इंटीजर जब वो तो प्रिंट हो चुका है लास्ट पे. अभी जब मैं इसे पॉजिटिव 6 के साथ रन करूँगी तो व्हाट विल हैपन कि इफ़ पे जब ये जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज 6 इज़ नॉट लेस देन 0. सो इट द कंट्रोल विल ऑटोमेटिकली मूव टू द लाइन नंबर 8 दैट इज़ एल्स एंड इट विल प्रिंट m इज़ अ होल नंबर. सो नाउ सी m इज़ अ होल नंबर. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ एल्स इफ स्टेटमेंट. एल्स इफ स्टेटमेंट का मतलब है कि रिपीटेडली मेरे पास आ रहे हैं, लाइक जैसे मैंने भी लिखा है इज़ लेस देन 0 है तो नेगेटिव कह दे. एल्स इफ, अब मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि अगर m 0 हो जाता है, इफ़ m इज़ 0 तो यहाँ पे कह दें कि m इज़ 0, ठीक है. और फिर हमें एक और एल्स देना पड़ेगा, लाइक वी आर राइटिंग ना एल्स इफ. तो एल्स इफ वाली स्टेटमेंट में क्या होगा, लास्ट में जाके आपके पास एल्स पे ही स्टॉप होगा. सो अब मैं यहाँ पे एल्स में दूंगी कि अगर वो लेट सपोज छोटा भी नहीं है 0 से, वो 0 के इक्वल भी नहीं है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या बच गई है कि इट इज़ ग्रेटर देन 0. सो इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 देन वी नीड टू प्रिंट हियर दैट m इज़ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक. एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन. Now see, m is positive integer will be printed on the screen because the value that we have taken is 6. So 6 is positive integer. See that अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू को 0 कर दूँगी, ठीक है. So now which message will be printed here? It will be m is 0. Okay, where I have written if m is 0, so basically this is a mistake. I am writing m is equal to 0. This statement is used for only initialization. So if I am checking something, I must put double equals to sign, ठीक है. Now I am running it again. So m is 0. See? So whenever you are checking some value that if it is equals to this, it is less than this or greater than this, तो equality में आप हमेशा क्या करेंगे, you will always put equals to, double equals to sign. double equals to किसके लिए यूज़ होगा, कंडीशन के लिए चेक होगा. और अगर आप जस्ट इक्वल टू करेंगे तो इट इज़ यूज फॉर इनिशियलाइजिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कंडीशन स्टेटमेंट इज स्विच. सो हम ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर चुके हैं m को. अब मुझे अगर m को चेक करना है तो आई विल राइट स्विच m. बेसिकली स्विच स्टेटमेंट जो है वो एल्स इफ की तरह यूज़ होती है. लाइक मुझे नहीं पता कि m की बहुत सी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं और हर एक के लिए मैंने यूज़र को डिफरेंट मैसेज जो है वो प्रिंट कराना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. स्विच के लिए हमने क्या किया, बॉडी इसकी स्टार्ट कर दी, ठीक है, यूजिंग द कर्ली ब्रेसेस. और इसमें हमारे पास ईच स्टेप पे यूज़ होगा द कीवर्ड केस. एंड इफ़ आई एम राइटिंग केस 1 कॉलन, इसका मतलब है कि अगर m की वैल्यू 1 है तो अब क्या होना चाहिए, दैट इज़ द स्टेटमेंट दैट आई एम गोइंग टू राइट अंडर केस 1. तो फिर हम प्रिंट करा देते हैं m is 1 and I am going to put this semicolon here, ठीक है. और फिर यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे. ब्रेक का ये मकसद है कि बेसिकली अगर केस 1 यहाँ पे ट्रू हो जाता है, केस जो लाइन नंबर 8 का केस है, अगर वो ट्रू हो जाता है, प्रिंट हो जाता है m is 1, तो वो बाकी सारे केसेस
को ना दिखे, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्विच की बॉडी से बाहर चला जाए एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट दैट आर रिटन आफ्टर स्विच स्टेटमेंट. सो नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट केस इज़, हम यहाँ पे दे देते हैं कि केस अगर लेट सपोज यहाँ पे आ जाए मेरे पास -1, तो फिर क्या होना चाहिए, आई विल प्रिंट m is -1 and then we have the semicolon here. Again I will write break semicolon. Okay, again come to the next case. अब हम next case अगर let's suppose हमारे पास 0 हो जाता है, तो what I am going to print on the screen, I will write cout and then inside the inverted comma m is 0 semicolon break semicolon and that's all. ठीक है, नाउ सी के हमें इनिशियलाइजेशन में हमने m को जो वैल्यू दिया दैट इज 0, तो इट मीन्स आर थर्ड केस लाइन नंबर 14 विल बी एग्जीक्यूटेड, सो एंड इट विल बी प्रिंटेड m is 0. So now see m is 0. Okay, what if we change the values here? I'm writing 1, now it will be written m is 1. So basically this type of program is beneficial when the user has entered some character and you are going to check that if the character is a vowel or the consonant. ठीक है, इसी तरह से अगर हमने कोई स्पेसिफिक लेटर चेक करना हो, ठीक है, तो हम वो कर सकते हैं. इसी तरह से अगर आप यूज़र से कहते हैं, कोई मेन्यू डिस्प्ले करते हैं और उससे कहते हैं कि चूज़ 1 if it's Monday, choose 2 if it's Tuesday, choose 3 if it's Wednesday, और फिर आप क्या करेंगे कि केसेस में 1 2 3 वो सारा लिख देंगे और सी आउट में आप कह देंगे today's Monday, today's Tuesday, today's Wednesday and so on. ठीक है, so when we have so many statements to check, there are many condition statements. In that case, switch statement is beneficial. If you like the video, then press the like button and subscribe the channel. Thank you.